when you are revising the things, we must have a feeling कि we have done each and everything. So बस एक feeling बहुत जरूरी है ये होना. Sabna is saying it's like some festival ending soon. अरे Sabna, it's not ending. Only ancient is ending. Medieval आ जाएगा ना फिर. Medieval is also very interesting. अगर नहीं भी होगा तो we'll try to make it interesting. ठीक है, we can at least try थोड़ा सा interesting हो जाए. आज आपको कुछ बुक्स की स्टोरीज के बारे में बताऊंगा आपको. I guess आपको पसंद आएंगी कुछ स्टोरीज. Okay, so yesterday we were discussing and कैमरा ने बोल दिया कि no, I'm not gonna start. आप कितनी भी बातें कर लो. So कैमरा वापस जा चुका है सोने के लिए. I guess it's having its lunch. So yesterday we were discussing the chronology, and in the chronology we have seen like who was the first person, founder, who is regarded as the founder. अभिनय founder कौन है like Guptas का? It was Shri Gupt. Abhinay unmute. Good afternoon, sir. Good afternoon. Abhinay, can you give me the chronology? Sir, it was Shri Gupt. Yes. Then it was his son Ghatotkaч. Okay. Then Chandragupt 1. Okay. Samudragupt. Samudragupt. And Chandragupt 2. Chandragupta 2. So Chandragupta 2 का यहाँ तक हमने देखा था. So Chandragupta 2 में एक चीज मैं छोड़ रहा हूँ for just 15-20 minutes, and that was that he was having Navratnas in his court. He was having yes Abhinay. So during this, like we know about Kumar Gupta also. So, like, do we add that in this only, or like the main is still Chandragupta 2 only? Pardon. कुमार गुप्त में मैं बता रहा हूँ ना कुमार गुप्त का. इनफैक्ट शायद थोड़ा बहुत मैंने बताया भी था कुमार गुप्त का, मुझे याद आ रहा है. Yes, exactly. हमने बताया था, but लेकिन sir till Chandragupta 2 I told maybe because the main three, sir, that is Chandragupta 1. ये तीनों मेन है. ये तीनों मेन है. कुमार गुप्त एंड स्कंदगुप्त तक आते आते देयर वाज लाइक स्ट्रेन इन द रिसोर्सेज, स्ट्रेन ऑन द रिसोर्सेज. और इसके बाद तो अगेन द सेम स्टोरी, वीक सक्सेसर्स, द सेम स्टोरी, वीक सक्सेसर्स. और वीक सक्सेसर्स हो जाएंगे तो द एम्पायर विल डिसॉल्व. एम्पायर दोबारा से खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा से जरूरत पड़ेगी एम्पायर बनाने की. Okay, so these three are the mains, but still for Kumar Gupta, we know that he was the successor of Chandragupta, and when he came to the throne, there was peace and prosperity. Also, he had founded Nalanda University, और इसी के टाइम से शुरू हो गया था Hun's invasion. तो if you remember, मैंने एक आपको नाम बताया था, मेहिर कुल. याद है आपको कहाँ पर बताया था? मेहिर कुल. If you remember, मेहिर कुल. Anyone? किसी को याद है? Somewhere I have told you this name, मेहिर कुल. I guess बताया होगा. नहीं बताया क्या? In the decline of Buddhism बताया होगा. Decline of Buddhism नहीं बताया मेहिर कुल. मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मेरे हिसाब से मैंने शायद बताया होगा. Janvi saying yes. Janvi, क्या था मेहिर कुल? Like why this man was like important for us? I know that I've heard the name, and as you said that decline में, so I think he was responsible for killing the I mean demolishing the those monasteries and everything, I guess. Okay, तो मैंने कुछ नाम बताए थे आपको. एक मैंने बताया था पुष्यमित्र शुंगा executed like monks. एक मैंने बताया था Hun King Mihirkul killed so many monks, if you remember. और एक और बताया था शशांक of God. 3 नाम बताए होंगे मैंने आपको. पुष्यमित्र शुंगा, Hun King Mihirkul and शशांक of God. तो ये Mihirkul जो था, he was a Hun, and these people they were from Central Asia. तो Central Asia से जो invasions हुए थे, those invasions actually started from the tenure of Kumar Gupta. जाने मिला? ओके, मुझे लगा शायद मैं भूल गया बताना. So कुमार गुप्त के पीरियड से Hun invasion चालू हो गए. Now when Hun invasion started, it was around you can say second half of 5th century. तब से स्टार्ट हो गया Hun invasion. और उसी ड्यूरेशन में the next person who came to the throne was Skandgupt. Skandgupt took actually effective measures. He was a nice person, he was an able fellow,
and he took very nice measures and fought successfully, और एम्पायर को बचा भी लिया स्कंदगुप्त में. बट प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम हो गई, देयर वाज स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेस. द प्रॉब्लम वाज देयर वाज अ स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेस के ऊपर पड़ गया स्ट्रेन. जब रिसोर्सेस के ऊपर पड़ गया स्ट्रेन एंड कपल्ड विद वीक सक्सेसर्स, तो स्टोरी सारी खराब हो जाएगी. जितना अच्छा गोल्डन पीरियड चल रहा था, है ना, जितना बढ़िया गोल्डन पीरियड चल रहा था, golden period will end. You actually at present you don't know why it was called as golden period. Today you will get to know like why the period was called as golden period. आज ही आपको पता चल जाएगा. But it was a golden period till, you can say, till Kumargupta, Skandagupta, it was a golden period. But after that the successors were weak. कुछ successors आए जिनके नाम हमें पता है. There were Purugupt. Actually no need to learn these, but still if you want, so there were so many. Narsimhagupt, हमें हिस्ट्री भी नहीं पता इन लोगों की. नरसिम्हागुप्त, नंबर 3 बुद्धगुप्त, नंबर 4 बालादित्य. ठीक है, so it's not the reverse name of the son of chief minister of Maharashtra, it is Baladitya. Vishnugupt. In fact, this Vishnugupt, he was the last recognized king. बोलते हैं विष्णुगुप्त को. ठीक है, but what happened? आखिरकार, in addition to the strain of resources and weak successors, what else? क्या हुआ जो गुप्तास को ले डूबा? What are the reasons for the downfall of Guptas? So reason number 1 was the thing that you already know, and that was called as rise of feudalism. क्या बात है जानी, बहुत बढ़िया. The rise of feudatories. You all know what is feudalism, very well you know, है ना. क्या हुआ, कैसे हुआ? So basically what happened, the Gupta kings, they appointed governors in different areas. different areas में कुछ लोगों को appoint कर दिया as governors. ठीक है, तो गवर्नर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, and so many people declared themselves as independent. अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया. जब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लिया तो इंपॉर्टेंट वर थ्री वर मोस्ट इंपॉर्टेंट जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया. वन वर द मौखारीस. एक को बोलते थे मौखारीस of UP and Bihar. Mokharis of UP and Bihar. They were ruling from UP and Bihar. Second were the princess of Thanesar. This later on came to be known as Vardhan dynasty. Also called as Pushyabhuti dynasty. Number third were Matrikas. Third थे Matrikas. So Matrikas of Gujarat region. तो इन तीनों ने अपने आप को क्या किया? What these people did, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया. ठीक है, दम है तो हमें हरा के दिखा दो, समथिंग ऑफ दैट काइंड. सो उन्होंने बोला ठीक है भाई, तुम भी खुश रहे तो सदा, है ना, सलाम दुआ है मेरी, समथिंग ऑफ दैट काइंड. सो दे वर द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम. एंड फ्रॉम देम इनमें से ये जो प्रिंसेस ऑफ थानेसर हैं, दे विल इमर्ज एज विक्टोरियस. इसमें से भी ये बन जाएंगे लाइक इंपॉर्टेंट, और ये एस्टैब्लिश करेंगे एक एम्पायर. थोड़े से टाइम के लिए सही, बट दे विल बी एस्टैब्लिशिंग वन एम्पायर. नाउ मैंने बोला कि मैत्रिकास वर रूलिंग इन गुजरात. So that means it was loss of Gujarat. Simple, it was loss of Gujarat. Gujarat खत्म हो गया. Now Gujarat was no more. And if Gujarat is no more, then sea trade is no more. Very simple. बिल्कुल एक चीज linked है. Everything is linked. So
मैत्रिकास ने गुजरात अगर ले लिया तो दैट मीन्स सी ट्रेड भी ले ली, सी ट्रेड खत्म। नाउ अब क्या होगा, सी ट्रेड खत्म हो जाएगा तो टैक्सेस कम आएंगे। वैसे गुप्तास के पीरियड में एक काम था, एक चीज थी, द टैक्सेस व्हिच वर इम्पोज्ड ऑन द ट्रेड वर एक्चुअली लेस कंपैरेटिवली। टैक्सेस वैसे लेस थे, बट स्टिल ट्रेड वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑन विच द इकोनॉमी डिपेंडेड, है ना। तो टैक्सेस तो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो ये एरिया चला गया, टैक्स नहीं आएंगे। अब टैक्स नहीं आएंगे तो अब क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट? द रिजल्ट विल बी you are having a large army, taxes have been reduced, taxes खत्म हो गए हैं already, so many people have declared themselves independent, you have granted land and like those people are not giving you anything, उन्होंने अपने आप को बोल दिया we are independent, है ना, इंडिपेंडेंट बोल दिया। फॉरेन ट्रेड डिक्लाइन हो गई, क्या होगा? क्या बात है कांची, बहुत बढ़िया। फाइनेंशियल क्राइसिस। एंड आपको क्या लगता है, टू रन एन एम्पायर व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स? एक एम्पायर को चलाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रन एन एम्पायर? नंबर 1, जानवी ने देखो 2 चीज बता दी, बहुत बढ़िया। फर्स्ट वाज फाइनेंस एंड सेकंड वाज आर्मी। एक और चीज चाहिए होती है, दैट इज प्रेस्टीज, नाम, रुतबा, ये भी जरूरत है। देखो ना आज क्या हो रहा है कांग्रेस की, अगेन लाइक विद होल माय फीलिंग्स, कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ। सो प्रेस्टीज की भी बहुत जरूरत है ना, प्रेस्टीज की भी बहुत, नहीं तो लोग जोक बना के रख देंगे आपका, है ना, कोई डरेगा ही नहीं आपसे। और ये हुआ था औरंगजेब के टाइम में, ओके, औरंगजेब के टाइम में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड व्हेन औरंगजेब वाज रूलिंग, ये आपने थोड़ा सा अगर देखा होगा मॉडर्न में। सो औरंगजेब स्पेंड ह्यूज टाइम इन डेक्कन, डेक्कन को जीतना चाहता था औरंगजेब, तो ही स्पेंट अ ह्यूज टाइम इन डेक्कन। उससे पहले क्या होता था, द पीपल लिविंग हियर they were afraid, नाम से डर लगता था। oh my god, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, है ना, सबके नाम से कांपते थे लोग, थर थर कांपते थे। बट व्हाट हैपेंड नाउ, औरंगजेब इज देयर इन साउथ for around 20 years, so there was a whole generation जिन्होंने औरंगजेब को कभी देखा ही नहीं है, उनका डर भी खत्म हो जाएगा, उनके माइंड से उनका डर खत्म हो जाएगा। सो प्रेस्टीज कम हो जाएगी, है ना। प्रेस्टीज, यू नो, लाइक प्रेस्टीज कम्स विद द डर, फियर फैक्टर। फियर एंड प्रेस्टीज आर इंटरलिंक्ड, सोच के देखना थोड़ा सा, है ना, फियर एंड प्रेस्टीज आर इंटरलिंक्ड। तो औरंगजेब के बारे में सबका दिमाग से डर ही खत्म हो गया। तो सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब, द न्यू जनरेशन, उनको लगता था कुछ है ही नहीं है, सब बकवास है, कुछ नहीं है, दे आर नॉट पावरफुल। अदरवाइज उससे पहले लोगों को लगता था दे आर सो पावरफुल भाई, इनसे पंगा नहीं ले सकते हैं। तो इट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब। सो एक एक करके सारी चीज जारी है, ना फाइनेंस, ना आर्मी, ना प्रेस्टीज। व्हाट डू यू थिंक? ये सब ना, one doubt, ये सब ना, Guptas were the feudatories of Kushans, so ठीक है, they know that if they get land, they can be stronger. So why they let others? why they were giving land? Yes. ओके सपना, क्या बहुत ही शानदार प्रश्न है सपना, वेरी नाइस क्वेश्चन। बट सपना इसका आंसर भी उतना ही सिंपल है। व्हेन अ पर्सन इज हैविंग एट द लाइक एट पीक, जब भी कोई इंसान ना पीक पे होता है, whosoever it is, उसको लाइक जो भी कुछ खराब चीजें है ना, वो उसको नहीं दिख पाती, नेवर। just see during the tenure of Indira Gandhi, when Indira Gandhi was ruling, everything was Indira में। ओके, आप हिस्ट्री में आ जाओ, इफ नॉट इंदिरा गांधी, जब भी कोई रूल करता है,
most of the times they are committing the same mistakes. Most of the time they are committing the same mistakes. Most of the times same mistakes commit करते हैं. आप देख लो ना, everyone हर किसी को ये लगता है कि बस वही है. उसको लगता है कि he is like the person is there for forever, immortal हो गए, forever यही रहने वाले हैं. वो भूल जाते हैं कि time is a thing which changes always changes. एंड जब भी ये चीज आप भूल जाओगे ना, द टाइम चेंजेस ऑलवेज, तो फिर तो आपसे फिर तो आप मिस्टेक्स करोगे ही करोगे, है ना, फिर तो मिस्टेक्स करोगे. अदरवाइज लाइक वन मोर रीजन इज फ्यू लाइक टू ग्रांट लैंड्स इट बिकेम अ नेसेसिटी आल्सो. मैंने समझाया था आपको व्हेन वी वर डूइंग फ्यूडलिज्म, इट बिकेम अ नेसेसिटी आल्सो. नेसेसिटी भी बन जाएगा, है ना. तो वो भी इन्होंने भी वही काम करे, है ना. कुछ तो नेसेसिटी बन जाता है और कुछ सत्ता का नशा ही ऐसा होता है सबना, है ना. देयर लाइक इन हिंदी, बट आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, सत्ता का नशा ही ऐसा है. सत्ता, यू नो व्हाट इज सत्ता? यू नो सबना व्हाट इज सत्ता? Power. Whosoever is in power, like there are so many ministers at present in this government itself. Like मैं क्या बताऊं आपको, जब भी मैं उनको देखता हूँ ऑन टीवी, like the nasha of that satta was every time on their face. And the government, like the government, the PM or the HM, जो भी like the command है, उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, so they changed many ministers very recently. You must be aware so many ministers have been changed. एक बार सोच के देखना, the ministers who have been changed very recently, उनके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल होती थी, that smile of power, that smile, वो एक स्माइल थी, वो स्माइल हमेशा से होती थी उनके चेहरे पे, like since the time they were ministers. I have observed this thing. अभी नहीं रहेगी वो स्माइल ना, उससे पहले थी वो स्माइल, है ना. तो वो एक पावर का नशा हो जाता है सबना. ओके सबना, बट ये बहुत जरूरी भी था उनके लिए उस टाइम पे, जैसे हमारे लिए जरूरी था 1991 में, है ना. पीपल से दैट वी डिड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वी वर फोर्स्ड टू ब्रिंग इन रिफॉर्म्स, है ना, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, वी वर फोर्स्ड. हम कहाँ सोचते ऐसा, हमारी सिचुएशन ऐसी हो गई थी, हमारी कंडीशन ऐसी थी, नो वन वाज विलिंग टू गिव अस एनीथिंग, है ना. कंट्री के अंदर सिचुएशन ऐसी हो गई थी. So basically we were forced. Okay. One thing more. Since when financial crisis occurred? तो ये financial crisis जो था, ये कब से शुरू हुआ? We know that from the middle of 5th century, थोड़े से attempt शुरू हो गए थे. There were attempts to maintain gold currency. कैसे मेंटेन कर सकते थे? To maintain gold currency, ये कैसे मेंटेन रखा जा सकता था? By reducing the content of gold. आप गोल्ड के कंटेंट को घटा दो. You reduce the content of pure gold. तो your जो गोल्ड है, वो जो आपका गोल्ड करेंसी है, वो उसके फ्लो को आप मेंटेन कर लोगे. यस कांची, यू रिड्यूस द प्योरिटी घटा दो आप. कंटेंट, प्योर गोल्ड कंटेंट घटा दो, दैट मींस यू आर रिड्यूसिंग द प्योरिटी. वेरी सिंपल, है ना, वेरी सिंपल. सो द रूल ऑफ गुप्तास वाज देयर टिल 6th century. गुप्तास ने 6th century तक रूल किया, बट the glory of Guptas, the glory was gone by the end of 5th century. The glory was gone. अब glory नहीं बची थी, केवल गुप्तास नाम के बचे थे छोटे से एरिया में, but no glory was there. So that was like that was the chronology of Guptas. देखते हैं इनका first of all administration. तो administration कैसा था? We know that the senior most person, the most important person at that time was the king. The post of king was hereditary, and the king used many titles. कई सारे titles थे जो king यूज करता था. जैसे आपको कुछ पता ही है, महाराज, याद है, महाराज, महाराजा धीराज,
Maharaja Dhiraj. There were some other titles which you don't know. Param Bhattaraka. Param Bhattaraka. Parameshwara. Parameshwar. Samrat. Chakravartin. चक्रवर्तिन. देखना जब हम मिडीवल में जाएंगे ना टाइटल्स कैसे चेंज हो जाएंगे. एज सुन एज वी एंटर द मिडीवल, दिल्ली सल्तनत से इल्तुतमिश से ही टाइटल्स चेंज हो जाएंगे, है ना. सो such type of titles will not be there. Titles will sound very different. बिल्कुल डिफरेंट टाइटल्स हो जाएंगे. सो एंशिएंट में बिल्कुल अलग टाइटल्स और मिडीवल में बिल्कुल अलग टाइटल्स. और मॉडर्न में आ जाएगा टाइटल अलग. लॉर्ड डलहाउजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, है ना. तो मॉडर्न में अलग. ओके, सो what does these titles signify? What does these titles signify? So now these were all by Guptas. Yes, these are the titles of Guptas. सब ना गुप्तास के. तो ये टाइटल अगर आप देखोगे, महाराजा धीराज, परम भट्टारका, परमेश्वर, परम ईश्वर, सम्राट, चक्रवर्तीन, they are signifying that the Gupta kings, जो गुप्ता किंग्स थे, they were ruling over small kings. छोटे छोटे राजाओं के ऊपर वो लोग रूल कर रहे थे. These titles actually signify that the kings were ruling over small kings. Small kings वही feudatories, जो feudatories होते थे उनके ऊपर kings रूल कर रहे थे. ये शो कर रहे हैं ये titles. Okay, so the king was assisted. King के पास होता था एक सेनापति. The empire was divided into provinces, and the provinces were called as empire was divided into provinces, and the provinces were called as bhuktis. 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 तो provinces were called as bhuktis. तो bhuktis हो गई provinces. जैसे आज के टाइम में we are having states, है ना. states जैसे होते हैं. So bhuktis were divided into vishyas. Like present day districts. Vishyas were divided into villages. तो जो empire होता था, empire का head कौन? Like who was the head of empire? Empire का head was the king. Empire का head हो गया king, है ना. और आपके भुक्तीस यानी प्रोविंसेस, भुक्तीस का हेड कौन? प्रोविंशियल गवर्नर्स, हु वर कॉल्ड एज उपारिकास. The governor of Bhuktis, provincial governor of Bhuktis were called as Uparikas. Vishyas का कमांडर कौन होता था? Vishyas were under विश्यपति, जैसे प्रेजेंट डे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. विश्यपति. एंड विलेजेस ये किसके अंडर में होते थे? विलेजेस ग्रामिकास. Villages were under gramikas. Okay. The urban places, जो urban places होते थे, urban lands होती थी, city. The city administration was looked after by Nagar Shreshthis. Nagar Shreshthis. Okay. जानवी ये क्या है? डैम. कौन सा डैम? क्या हो गया जानवी? I'm just surprised with the kind of administration they have, and this is ancient time that we study. Yes, this is ancient. Ancient में हमारा इतना बढ़िया सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का.
इतना बढ़िया सिस्टम था एंशिएंट में. एक्चुअली वी मस्ट लर्न फ्रॉम एंशिएंट इंडिया. एक और चीज हमें लर्न करना चाहिए. जितने भी अभी तक आपने किंग्स देखे होंगे, है ना, whatsoever the religion is, whatsoever of the religion of the king is, the kings were tolerant. Have you seen this thing? Have you observed this thing? The kings were tolerant. So basically मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जब भी एक नई गवर्नमेंट आती है ना, so उसको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेनिंग देना चाहिए, है ना. ऑल द एमपीज मस्ट बी गिवन ट्रेनिंग कि कुछ भी हो जाए आप कुर्सी उठा के नहीं फेंकोगे, है ना, आप पेपर नहीं फाड़ोगे. एक तो ये ट्रेनिंग देना चाहिए, है ना. एंड उनको ना एंशिएंट से रूबरू कराना चाहिए. एंशिएंट इंडिया, उन्हें एंशिएंट इंडिया पढ़ाना चाहिए. बेसिकली इट्स रिक्वायर्ड, है ना. सबके सब लाइक सो मेनी पीपल still illiterate people are sitting in the parliament, and I don't know how people are voting these people, like voting the people who are illiterate. मुझे समझ नहीं आता कि लोग वोट ही कैसे कर देते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट लाइन. मुझे तो बहुत प्रॉब्लम है इस चीज से. Like the illiterate people should not come into the parliament. इससे और ज्यादा like will be जो भी लोग हैं, the people who are in politics, उन्हें भी लगेगा they will also be like thinking कि हमें पढ़ना चाहिए, है ना. और सबने saying no options sometimes. Jani, times are changing, yeah, but times are changing very slowly, very slowly. बड़ा बहुत स्लो चेंज कर रहा है. मतलब पता है व्हाट द प्रॉब्लम. दिस वाज जस्ट आई वाज डिस्कसिंग दिस थिंग इन लाइक वन अदर क्लास आल्सो टुडे इन माय ऑप्शन क्लास. व्हाट इज हैपनिंग इज लाइक मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात बताता हूँ. द पीपल यू आर लाइक हु आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, द पीपल हु आर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिकॉज आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, से मैं यूपी का लाइक एग्जांपल ले रहा हूँ. द पीपल फ्रॉम उत्तर प्रदेश, अगर आप उनसे पूछो कि आर दे हैप्पी about the electricity supply, so you know what the people will be saying, most of the people, and this is not political, ठीक है. a political question कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी ठीक ठाक आती है, बिजली ठीक ठाक आती है. the people will be saying like comparatively पुराने जमाने से तो बहुत बेहतर है पुराने जमाने से. the next question will be for how many hours like there are the cuts, electricity cuts. तो कोई बोलेगा किसी शहर में like for 2 hours, in some cities 3 hours, 4 hours, 5 hours, rural areas में sometimes more than that, है ना, more than that. And people don't have objection to this. People are used to this. People are used to all these things. Like in Uttar Pradesh, you cannot have an AC without a stabilizer. I hope some of you must be knowing this fact. In UP, you cannot have an AC without a stabilizer. But the people who are from Mumbai, तो वहां पर किसी को पता ही नहीं है कि we also require a stabilizer. कोई जरूरत ही नहीं है. I was in Mumbai for 5 years. 5 साल में मुंबई में था as my like punishment posting. 5 साल तक मुंबई में था, punishment posting पे था. And in this 5 years, 5 बार cuts हुए होंगे बस. Hardly 5 times of 5 minutes each. Only there was one cut of half an hour, and that was already declared कि half an hour का कुछ आपके एरिया में कट होगा, वो भी डिक्लेयर था. इतना बढ़िया सिस्टम था, इतना नहीं. लाइक देयर इज नो पावर बैकअप इन मुंबई. किसी भी ऑफिस में, किसी भी रेजिडेंशियल सोसाइटी में, एक्सेप्ट फॉर द लिफ्ट्स एंड सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, इस जैसे के लिए पावर बैकअप नहीं होता. हमारे यहाँ पे, हमारे लाइक उत्तर प्रदेश में, every house is having an inverter. Every house is having, if the people are having AC, they are also having stabilizers. Most of the people are having stabilizers on the main line. And just check the price of electricity of Delhi and price of electricity of UP. And again I'm saying it is just apolitical. इसमें कोई politics के लिए नहीं बोल रहा. It is just ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ. We are used to it. We have become used to it. Till the time हम लोग बाहर नहीं आएंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा, है ना. मैं जब मुंबई आया, मुझे पता चला अच्छा 24/7 इलेक्ट्रिसिटी भी आ सकती है. जब मैंने वहां पर एसी खरीदा, तब मुझे पता चला देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ स्टेबलाइजर फॉर एसी. देयर आर नो पावर फ्लक्चुएशंस, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट मुंबई. सो व्हाई वी आर नॉट मेकिंग दिस टारगेट? लोगों के पास ये टारगेट ही नहीं है. लोग इसी से खुश है.
जब लोग इसी से खुश है तो गवर्नमेंट को क्या है, आप डिमांड नहीं करोगे, गवर्नमेंट क्यों आपको देगी? इट्स सो सिंपल. सो बेसिकली टिल द टाइम वी आर नॉट डिमांडिंग, देयर इज अ सेंटेंस इन which says like a mother feeds her child when he cries. He or she cries. A mother feeds the child when he or she cries. Before that, mother never feeds a child. उसे याद भी नहीं रहेगा कि इसको like he needs to be like feeded upon. उसको याद भी नहीं रहेगा. The same goes for the government and the citizens. Till that time citizens नहीं demand करेंगे, like till that time government क्यों देगी? Government को के सपने आएंगे. And one more thing, जो हम मांगेंगे गवर्नमेंट हमें वो दे देगी. If we demand health and education, it will be giving health and education. If we are demanding temples and mosques, government will give temples and mosques. It's so simple. It's the thing that what we demand, हम demand क्या कर रहे हैं. So maybe some of you may not like my thoughts. It's like but obvious, but these are mine. I don't have any problem about your thoughts. Okay, so अब एक और चीज बताता हूं आपको. ये बताने के बाद में द किंग, आर्मी के बारे में एक बात बताता हूं. द किंग वॉज हैविंग अ स्टैंडिंग आर्मी. स्टैंडिंग आर्मी का मतलब क्या होता है? व्हाट दिस वर्ड मीन्स स्टैंडिंग आर्मी. व्हाट इज दिस स्टैंडिंग आर्मी, शुभ्रा? यस शुभ्रा. Am I audible, sir? Yes, you are audible, Shubhra. Sir, basically, which is on foot and not which using any is? horses or elephants. Which is on foot and not using Which is on any foot. horses. Okay, anyone else? Okay, Shubhra, ठीक है. So I think it's a properly maintained permanent army which you can use anytime whenever required. So it's like always Exactly. It means permanent army. Standing army means permanent army. कोई टेम्पररी आर्मी नहीं है जैसे आर्यंस के टाइम में होता था ना कि द पीपल वर डिप्लॉयड कि चलो भाई तुम अब लड़ाई करनी है. ऐसा नहीं होता था. द आर्मी इज परमानेंट. इट इज डूइंग ओनली द वर्क्स ऑफ आर्मी. इट इज ऐसा नहीं खाली टाइम में खेती कर रहे हैं. ओके शुभ्रा एंड ऑल. सो अगर मैं कई बार कुछ ऐसा बेसिक सी चीज ना बताऊं तो यू कैन आस्क मी. ओके. So what I was telling, the king had an standing army, but king के पास feudatories भी थे. There were some feudatories, and feudatories के पास भी army हुआ करती थी. तो king was also using the army of feudatories, है ना? King was also using army of feudatories. Horse तो मैंने बता ही दिया था. Horse archery was very important, है ना? तो क्या हुआ? अब क्या हुआ? The taxes on land वो ज्यादा हुआ करते थे कंपैरेटिवली ऑन विद द टैक्सेस ऑन ट्रेड. तो ट्रेड के ऊपर टैक्सेस थोड़े कम थे एंड लैंड के ऊपर टैक्सेस ज्यादा थे. तो what will happen in addition, whenever the royal army, this is very important, whenever the royal army passed through like villages, countryside, whenever royal army is passing through the countryside, अब जब भी आर्मी कहीं दूर जा रही है ना, लाइक आर्मी को यहाँ से यहाँ जाना तो मैप में देखने पे तो छोटा सा एरिया लग रहा है, बट एक्चुअली इट्स वेरी फार, है ना. और उस टाइम पे ट्रेन्स और लाइक एयर रूट भी नहीं होता था. आर्मी को तो लाइक कैवलरी को तो पैदल ही चलना है. सो इट वाज अ ह्यूज डिस्टेंस. तो whenever royal army passed through the countrysides, the locals were required to feed it. Locals को उनको खाना खिलाना पड़ेगा. Feed it. Also, locals will supply animals. Animals की supply भी देनी पड़ेगी. For dairy products like दूध, दही, घी, for milk, curd and ghee. Also for non-veg food. ठीक है. Also, locals need to give food grains. आपको फूड ग्रेन्स भी देने पड़ेंगे, है ना. फूड ग्रेन्स भी देने पड़ेंगे लोकल्स को. ऑल्सो फर्नीचर भी देना पड़ेगा. तो यहाँ फर्नीचर से क्या मतलब है? व्हाट डू आई मीन बाय फर्नीचर हियर? यस, फर्नीचर हियर मीन्स व्हाट? आई डोंट नो व्हाई आज मुझे लाइक राहुल गांधी क्यों इतने याद आ रहे हैं. फिर से मुझे राहुल गांधी की एक सभा याद आ गई
So the एक सभा करी थी राहुल गांधी ने. I guess the sabha was in Haryana, and it was a Chopal something. He went to some place, and इस सभा में क्या हुआ था? The people were sitting on charpais. Do you know what is a charpai? Cot? Do you know? गांव के अंदर like आपने देखा होगा some cot type, है ना? It is made up of jute. यहाँ पर कुछ ऐसे होता है, and कुछ तो डिजाइन सा जूट से बना हुआ ऐसे होता है ना? And it is not fixed. आप जब इसके ऊपर बैठते हो तो थोड़ा सा लगता है कि द कॉट इज टेकिंग योर शेप, है ना? ऐसा वाला जो होता है उसको कॉट बोलते हैं. हिंदी में बोलते हैं खटिया या चारपाई. सो वो वाला फर्नीचर की बात है, उस फर्नीचर की बात है. सो आर्मी को सोना पड़ेगा ना, तो गांव वालों को क्या देना पड़ेगा? गांव वालों को चारपाई देनी पड़ेंगी, चारपाई देनी पड़ेंगी. ये टैक्सेस के अलावा है. दिस वाज इन एडिशन टू द टैक्सेस. In addition to the taxes, in fact, what happened in the central and western India, central and western India में तो इसके अलावा भी कुछ और था. इसके अलावा भी कुछ और था. Central and western India में villagers were subjected to forced labor. They were subjected to forced labor. This forced labor was called as विष्टि. विष्टि, इसी फोर्स लेबर को बोलते थे हम विष्टि. और फोर्स लेबर कौन करवाता था? द फोर्स लेबर बाय द रॉयल आर्मी एंड द ऑफिशियल्स. जो ऑफिशियल्स होते थे और जो आर्मी होती थी, वो फोर्स लेबर करवाता था. फोर्स लेबर वाज कॉल्ड एज विष्टि. हाउ डू वी नो दिस विष्टि? About Vishti, we have found one inscription. The inscription is Junagadh inscription. The inscription is Junagadh inscription. Junagadh inscription. क्या लिखा है Junagadh inscription के ऊपर? Junagadh inscription mentions Vishti. It mentions Vishti as one form of tax. As one form of tax, which was extracted from Gujarat and Malwa region, specifically Gujarat and Malwa region. It was forced labor. You can write this line. Junagadh inscription mentions Vishti. Junagadh inscription mentions Vishti as one form of tax. As one form of tax which was extracted from Gujarat and Malwa region. Malwa region. Malwa region. It was forced labor. It was forced labor in lieu of tax. It was forced labor in lieu of tax. It was not a wage labor. It was not a wage labor. And could be taken from anyone. And could be taken from anyone. Okay, written.
ओके, अब मैंने आपको कुछ बताया था. देयर वाज अ ट्रैवलर हु केम फ्रॉम चाइना ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ C2. याद है? व्हाट वाज दैट नेम ऑफ दैट ट्रैवलर? द नेम ऑफ ट्रैवलर, व्हाट वाज द नेम ऑफ ट्रैवलर? फायान और फाहीन, कैसे भी आपको प्रोनाउंस करना है आप कर सकते हो. ठीक है, फायान और फाहीन, ही वाज अ पर्सन. तो फायान ने रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ बातें बताई हैं. अकॉर्डिंग टू फायान, the Gupta administration was mild and benevolent. Mild and benevolent. Number two, there was no restriction on people's movement. There was no restriction on people's movement, and people enjoyed large degree of personal freedom. He also told that there was no state interference. ये भी बताया, there was no state interference. There was no state interference in individual's life. और बताया, the punishments were not severe. The punishments were not severe. Punishment severe नहीं होती थी. The most common punishment was imposition of fines. The most common punishment was fines, imposing of fines. एक बड़ी अलग सी बात बताई फायान ने, हमें पक्का नहीं पता, बट फायान ने बताया देयर वाज नो स्पाई सिस्टम. ऐसा हो नहीं सकता वैसे, बट फायान ने ऐसा बताया, देयर वाज नो स्पाई सिस्टम. फायान ने एक और चीज बताई, द रोड्स वर सेफ फॉर ट्रैवलर्स. The roads were safe for travelers. How he could like such thing? How ये बात कैसे बोल सकता है फायान? अभिनय सिंह, maybe it was so good that exactly अभिनय, exactly यही मैं बोलना चाह रहा हूँ. Exactly मैं यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब मेरी इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग हुई थी, so what the IB people told, there is a golden rule for intelligence. अगर मैंने आपको पहले नहीं बताया, there is a golden rule for intelligence. The rule is no surveillance at the cost of exposure. No surveillance at the cost of exposure. आप नहीं कर पा रहे हो मत करो, लेकिन एक्सपोज नहीं होना. अगर आप एक्सपोज हो गए then फिर वो पूरा का पूरा स्टोरी खत्म. You will get like an extra chance for that surveillance. But एक बार अगर एक्सपोज हो गए तो पूरा का पूरा ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, उसी दिन ऑपरेशन खत्म हो जाएगा. So maybe that's the story. हाँ, तो मैंने पूछा how Fayan said this thing, the roads were safe for travelers, because Fayan was never robbed of his belongings. Fayan ने इतना ट्रैवल किया, मैंने आपको मैप भी दिखाया था, he was never robbed of his belongings. तो उसको लगा अच्छा ये तो कहीं चोरी चकारी भी नहीं होती. तो याद रखना, he was not robbed of belongings. थोड़े से टाइम के बाद सिचुएशन विल चेंज, टाइम विल चेंज. ठीक है, ये याद रखना बात. कल या परसों आपको कुछ और बात बताऊंगा इसी से रिलेटेड. ये सब ना, he will be telling all these points in comparison to his nation or place, right? या बिल्कुल सही बात है. वो तो एक जनरल कंडीशन लिख रहा है, बस स्टेट के बारे में, किंग के बारे में कुछ नहीं लिखेगा. नॉट इवन द नेम ऑफ द किंग, नॉट इवन द नेम ऑफ द किंग वाज यूज्ड बाय हिम. एक कुछ जनरल कंडीशन लिखेगा कि दिस वाज द जनरल कंडीशन व्हेन आई विजिटेड देयर. एंड मैंने पहले बताया था, ही वाज लुकिंग एवरीथिंग फ्रॉम द बुद्धिस्ट एंगल. ओके सबना. सो फायन ने बोला देयर वाज नो फियर ऑफ थीव्स ऑन रोड्स. द पीपल वर प्रॉस्पेरस एंड crime was negligible. नेग्लिजिबल क्राइम था. तो ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन थी गुप्तास के पीरियड में. ओके, अब देखते हैं सोशल लाइफ. दिस इज समथिंग सोशल लाइफ which many of you will not like it. It is the only dark page in the during the tenure of Guptas. Why I am saying this? In the social life, point number 1, caste system became rigid.
कास्ट सिस्टम बिकेम रिजिड। इसका मतलब टॉप पोस्ट तो ब्राह्मण्स की ही रहेगी, टॉप पोस्ट ब्राह्मण्स की रहेगी। गिफ्ट्स तो स्टार्ट पहले कर दिए थे, आपको याद है सतवाना से मैंने बताया था लैंड ग्रांट्स स्टार्टेड हो गई थी, याद है आपको? लैंड ग्रांट्स वर स्टार्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सतवानास, आई होप यू रिमेंबर दैट। तो ब्राह्मण्स वर नाउ दे वर गिवन गिफ्ट्स। गिफ्ट कौन देगा? गिफ्ट देगा रूलर्स एंड आल्सो द रिच मर्चेंट्स, और यू कैन से वेल्दी पीपल, रिच मर्चेंट्स और वेल्दी पीपल, ठीक है। अनटचेबिलिटी was practiced on a wide scale now. Untouchability practiced on a wide scale. फायान ने बताया है चंडाल्स, you know who are Chandals? You must have heard this name Chandals. राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी सबको पता होगी, I guess. राजा हरिश्चंद्र, have you heard the story of Raja Harishchandra? Yes, have you heard the story of Raja Harishchandra? बहुत फेमस है अपने इंडिया में राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी। नहीं सुना किसने भी राजा हरिश्चंद्र की स्टोरी? सबने ने सुना है बट डोंट रिमेम्बर। अरे राजा हरिश्चंद्र, saying same. Mragank, you remember? You remember? Yes, Mragank, unmute please. Yes, Sindhuja, बिल्कुल Sindhuja, one who doesn't lie, one who doesn't lie, वही वाली। Yes, Sindhu, do you want to tell others? I don't know the story, Professor, but I know my mom keeps comparing. So. Okay. Janvi Singh, लेकिन स्टोरी ठीक है। अरे एक राजा हुआ करता था, the name of the king was राजा हरिश्चंद्र, and राजा हरिश्चंद्र he was a person, बिल्कुल एकदम बिल्कुल झूठ नहीं बोलेंगे, will not lie, and जो बोल दिया सो बोल दिया। Sometimes like someone came and he donated everything to him, even his kingdom, even his son, even his like सब कुछ डोनेट कर दिया। एंड जब कुछ भी नहीं बचा तो he did the job of Chandal. He did the job of Chandal. So once like his son died, when his son died, so his wife took his son to that crematorium, and वहाँ पर Raja Harishchandra was working as a Chandal. So that lady said, I don't have like even the money to buy a cloth to cover the body. So still, Raja Harishchandra knew that it is his son, but still he did not give even a piece of cloth to the lady because it was not his. So उससे भगवान खुश हो गए और उसके बाद like he got everything back, something like that. एक स्टोरी थी, बचपन में पढ़ी थी. In fact, Raja Harishchandra is the name of the first Bollywood movie. Raja Harishchandra is the name of the first Bollywood movie. If you know, 1913 में आई थी राजा हरिश्चंद्र, बट उसमें कोई भी बोलता नहीं था. No, like it was a silent movie. The first speaking movie came in the year 1931. It was Alam Ara. Alam Ara. Alam Ara was the first speaking movie which came in the year 1931. You can see 13 and 31. ठीक है, तो ये टेक्निक्स होती हैं याद करने की. देखो मैंने कब याद किया था, मुझे आज भी याद है. These are the techniques to remember. Use them. So Chandals, according to Fayan, Chandals were segregated from the society. Chandals were segregated from the society. They could not live with the society. वो गांव के बाहर अलग रहेंगे. They were not allowed to enter the village. The status of women became miserable. They could not study the religious texts now. Women could not study religious texts now. Even Manusmriti, the first law book, मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ था कि लड़कियों की तो आप जल्दी शादी कर दो, इट्स बेस्ट, अर्ली मैरिज फॉर गर्ल्स, चाइल्ड मैरिज. मनुस्मृति ने बोला चाइल्ड मैरिज कर दो और झंझट से बचो, चाइल्ड मैरिज कर दो, बिल्कुल जितनी जल्दी हो सके बच्ची की शादी कर दो पहले. So child marriage became prevalent. The right to select husband of choice. तो इसमें तो मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा, है ना.
जैसे ही मैंने बोला द स्टेटस ऑफ विमेन वाज मिजरेबल, तो ये तो बहुत बड़ी वाली लग्जरी होगी, द राइट टू सेलेक्ट हस्बैंड, द चॉइस ऑफ हस्बैंड। तो ये चॉइस ऑफ हस्बैंड अभी भूल जाओ, है ना, अभी भूल जाओ चॉइस ऑफ हस्बैंड, नो चॉइस ऑफ हस्बैंड। The kings basically they were following Brahmanism. The kings were following Brahmanism. और ब्राह्मणिज्म में भी they were following, because इसमें दो सेक्ट्स आते हैं, वैष्णविज्म एंड शैविज्म. So the kings were following, most of the kings, mostly Gupta kings were Vaishnavites. Vaishnavites. Mostly Gupta kings were Vaishnavites. और अगर वो like ये religion follow करेंगे, so what they will be doing? So they'll be doing all those sacrifices. कौन सी? That वही Ashwamedha sacrifices. Remember that Ashwamedha sacrifice? Ashwamedha sacrifice, है ना? They worshipped images. They worshipped images. They celebrated religious festivals with elaborate rituals. They celebrated religious festivals with elaborated rituals. Yes, Jani, बताओ. So sometime back when we were doing CG2, like Chandragupta 2, then we learned that he had placed his queen's picture on the coin as well. So that was kind of reflecting equality, or like a good sign to me. And suddenly No, that was not for the equality, Jani. Yeah, that I know now. Now I get it. What That was for something. वो किस चीज के लिए था? वो ये सोचो जानी, वो क्यों था? To show that he was married to a Kshatriya, so to increase his Exactly. That I get it. But my question is that as we have, also studied that in some parts of history, like there were places where, the women from higher classes or aristocrats were, led into education and everything. So was the situation here something like that, or were all women declined of any sort of education? कोई नहीं, ना everyone will be declined. Most of the women. From here we see the complete decline of Yes, अभी यहाँ से एजुकेशन खत्म विमेन के लिए. अब हमें मॉडर्न में आना पड़ेगा, वो भी 2000s में आना पड़ेगा. इतना टाइम लगेगा. Okay, Janvi? Yes, Amna? One small thing. While we were telling other Gupta kings, weaker kings, there was one name like Buddha Gupta. Gupta, yes. Yeah, was he following Buddhism or it's just a name? Frankly speaking, we don't know. हमें उनके बारे में हिस्ट्री नहीं पता ना, कुछ भी सबना. We don't know. जब भी हम गुप्तास के बारे में बात करते हैं, it is the main Gupta rulers. क्योंकि वीक जो सक्सेसर्स हैं, the people उनके केवल हमें नाम नहीं पता है. We don't know like what was the system, what was the religion they were following. हमें पता है they were very weak और वो कुछ नहीं कर पाए. तभी तो we don't know उनके बारे में. ना उनके बारे में कोई लिटरेचर है. Whatever we are discussing here focuses on CG1, Samudragupta, CG2. This is still Skand Gupta. Okay. This is still Skand Gupta. Sindhuja, after Skand Gupta, it was Puru Gupta, Narasimha Gupta. Damini, all this is account to Fayan. नहीं दामिनी, जहाँ पे भी फायन का अकाउंट है वहां मैं बता रहा हूँ आपको. जहां पर भी फायन का मैं नाम ले रहा हूँ वहां मैं आपको ऑलरेडी बता रहा हूँ. ठीक है? So the kings, they were following this Vaishnavite religion follow कर रहे थे, and worship of images became very common. Now what will happen to Buddhism and Jainism? So Buddhism and Jainism will be neglected. But neglected, इसका ये मतलब नहीं है they will be persecuted. There's a difference between these two things. Neglected and persecuted, there's a difference. There's a huge difference. So they were neglected. But so there were some Buddhist scholars, जैसे एक नाम बताता हूँ आपको, Vasu Bandhu was a Buddhist scholar. He was patronized. Western India में and Southern India में, Western and Southern India में during this time, Jainism was flourishing. Jainism था वेस्टर्न और वेस्ट और साउथ में, है ना. जैनिज्म अपना वेस्ट और साउथ में फ्लरिश हो रहा है. इनफैक्ट ड्यूरिंग द पीरियड
ऑफ लाइक गुप्तास के टाइम पर ही 512 एडी में जेन्स की सेकेंड काउंसिल हुई, सेकेंड काउंसिल ऑफ जेन्स। द सेकेंड जैना काउंसिल ये कहाँ पर हुई? ये हुई वेस्टर्न इंडिया में, गुजरात में। द प्लेस इज वल्लभी, वल्लभी। This was in Vallabi, and here the Jain canons of Shwetambar were written. The Jain canons, the Jain literature of Shwetambar sect was codified or was written. यहाँ पर आके श्वेतांबर सेक्ट का लिखा गया था. It was like presided by a person whose name was देवर्धी गनी. देवर्धी गनी, ठीक है, देवर्धी गनी. तो गनी का देवर था दीदी तेरा देवर दीवाना, उससे याद कर लेना. श्वेतांबर, व्हाइट कपड़े पहन के, सलमान खान इज डांसिंग, एंड क्या हो रहा है? ही इज राइटिंग सम बुक एंड ही इज राइटिंग. कांची वासुबंधु वाज अ बुद्धिस्ट स्कॉलर. He was a Buddhist scholar. He was patronized. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, during the time of Guptas, though they were Vaishnavites, but still they were patronizing Vasubandhu. During their time, Jaina Council भी हुई थी वल्लभी में. It was presided by देवर्धी गनी. By the way, first Jain Council कब हुई थी? ये तो second तो ठीक है, first कब हुई थी? When we were doing Jainism, तब मैंने आपको बताया था. क्या बात है सिंधुजा, बहुत बढ़िया. फर्स्ट काउंसिल हुई थी 3rd century BC में, वेयर पाटलिपुत्र, इफ यू रिमेम्बर, लाइक मीटिंग करी थी दोनों ने जब साउथ वाले वापस आए थे ना. रिमेम्बर इफ यू रिमेम्बर द पीपल फ्रॉम साउथ दे केम बैक आफ्टर द फेमीन, है ना. तो एक मीटिंग हुई थी, वो जो मीटिंग थी that is called as first Jaina Council, 3rd century BC in Patliputra. It was presided by स्थलबाहु. और जो लोग साउथ से आए थे उन्होंने उसको बहिष्कार कर दिया था कि हम उसको अटेंड नहीं करेंगे. ऐसे करके कोई नारे भी लगाए होंगे, क्या पता. ओके, ठीक है. सो these two councils. Now थोड़ा सा देखते हैं जुडिशियल सिस्टम ऑफ गुप्तास. So the judicial system of Guptas was like developed. It was a developed judicial system. था. They were like, अभी क्या हो गया? The civil and criminal laws were clear cut demarcated. जैसे आज हमारे टाइम में, during the present times we have a like clear cut demarcation of the civil and criminal laws. है ना, आपको पता है, we are having something called as CPC. Also we are having something called as CRPC, Code of Civil Procedure and Code of Criminal Procedure. Different, अलग laws. तो जैसे theft है, theft and adultery. What is adultery? Adultery क्या होता है? Theft and adultery were under criminal laws. What is adultery? You know what is adultery? This section was struck down by Supreme Court. ये section था हमारे IPC का 497. Section 497 of IPC. It was struck down by Supreme Court. But what is adultery, by the way? Adultery होता क्या है? Anyone? किसी को पता है adultery क्या होता है? देखो, अभी मैं adultery का दूसरा नाम लूंगा, सबको पता होगा. Extra marital affair. Okay, extra marital affair. You are married person and still you are having physical relationship with someone else. That is adultery. तो हमारे यहाँ पे crime होता था ये पहले. This was a crime. Okay. I don't know what are your views, but I don't think कि इसको crime मानना चाहिए कि नहीं. It is like, I guess, if it is not forced, it must not be considered as a crime. मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि I'm married. मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ I'm married, but I seriously think, because most of the time what is happening is, in so many marriages,
like one person or the other person is not happy with the marriage but cannot take divorce because of so many reasons. Because of so many reasons they cannot take divorce. So in that situation the person are living like separately, the person is living separately. So I don't think that is a crime. Seriously, I don't think that is a crime. बाकी like आपको पता है, मेरे ख्याल से शायद सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सोचा होगा, तभी सुप्रीम कोर्ट हैज स्ट्रक डाउन दिस सेक्शन. सबने से चीटिंग goes on. सबने कैसे cheating goes on? How? No, otherwise this law was there, people will be afraid and to talk openly. Acha, you are saying ki, because this section is struck down, section is struck down, now people will be more engaged in adultery. Are you like, do you want to say this? No sir, if someone is not, they can openly tell other than cheating. They can openly tell now. Yeah. Okay. तो ज्यादा बेटर है, I guess ज्यादा बेटर है ना. I mean, like वैसे भी धीरे-धीरे we are going towards west. है ना, धीरे-धीरे we are going towards west. Like in India, like हमारे जो so called as अमिताभ बच्चन का डायलॉग था ना मोहब्बतें मूवी में, प्रतिष्ठा, परंपरा और एक और वर्ड था कुछ from the word P, है ना, वो जो था. तो हम लोग उसी में ज्यादा पड़े रहते हैं ना, उसी में घूमते रहते हैं. ओके. अनुशासन नहीं, अनुशासन, प्रतिष्ठा, परंपरा, अनुशासन, मुझे याद नहीं आ रहा अभी. अनुशासन है. ओके, अभी दो लोगों ने बोल दिया, इसका मतलब अनुशासन ही होगा. सो थेफ्ट एंड एडल्टरी वर अंडर क्रिमिनल लॉज एंड डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग टू प्रॉपर्टी. ऐसे डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी वर अंडर सिविल लॉ. ये आता था सिविल लॉ के अंदर. ओके, देयर वर लॉज फॉर इनहेरिटेंस. Do you know that they at present also we are having some laws for inheritance? Do you know this thing? अभी भी हमारे पास laws हैं inheritance के लिए. And now like if like ये जो parents हैं, like parents, so parents के इनके एक बेटा है और एक बेटी है, एक बेटा है एक बेटी है. तो according to law at present, who is entitled for the property of parents? Janvi Singh equal. दामिनी सिंह डॉटर. अरे दामिनी क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रहे हो? डॉटर, सन का क्या होगा बेचारे का, ऐसे क्यों बोल रहे हो? सो इट्स इक्वल, इट्स बोथ, है ना, इट्स बोथ, है ना. अब लॉफुली तो दोनों है, बोथ. बट आई टेल यू वन थिंग, what I have seen in the society as well as in the court, whenever this girl, this sister takes half of the property of her property from her brother, this brother, whenever this girl asks for the property for her share, either the brother will not give, or अगर दे दी, for whole lifetime, like there will be no relationship. आपस में सब बातचीत खत्म, no relations. And most of the time the girl need to file a case in the court to get the property. Because मैं ऐसे डिपार्टमेंट में था कि like कोर्ट के अंदर एक हफ्ते में 2 से 3 दिन तो कोर्ट के अंदर बैठना है. सो कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, हाई कोर्ट. तो बॉम्बे हाई कोर्ट में यही केसेस चलते रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम. ऐसे ही केसेस मैंने देखे. एंड ब्रदर एंड सिस्टर, दे आर जानी दुश्मन ऑफ ईच अदर. द सिस्टर वांट्स टू हैव ऑल द प्रॉपर्टी, द बॉय don't want to give even a single rupee. That's the story that I have seen in the courts. Normal story of courts के अंदर. Okay, so the laws. Yes, Abna? One thing regarding the councils, why so long to get to the second council after Why? the first? अच्छा, ये जैन काउंसिल. Yes. हाँ, आप बोल रहे हो कि मतलब इतना टाइम 3rd सेंचुरी BC से सीधे 6th सेंचुरी AD में जा रहे हैं, इतना लंबा पीरियड. बात तो सही है, उनको टाइम नहीं मिला होगा ना. उनको टाइम नहीं मिला होगा. They never thought of to write before, है ना. They never thought of कि चलो कुछ लिखते भी हैं. उनके पास कुछ था लिखने के लिए. अब उनको फीलिंग आई कि if we are not codifying, देखो अब क्या हो रहा है ना सबना. Now what is happening? Before this time, like Buddhism and Jainism were there. Now
what is happening? Hinduism is taking deep roots. When Hinduism is taking deep roots, what will happen? After one generation or two generation, the teachings of Mahavira will get lost. If you want to save teachings now, अगर आपको teachings बचानी है, तो you need to write the teachings. Okay, Sabna? You need to write the teachings. You need to codify them. आपको लिखना पड़ेगा उनको, otherwise the teachings will be lost. है ना सबना? सही बात है. टीचिंग गायब हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी. एक बीच में ऐसी जनरेशन आ जाए, बिकॉज इट वाज बेस्ड ऑन श्रुति ट्रेडिशन. आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको, इट वाज बेस्ड ऑन श्रुति ट्रेडिशन. हियर से इट वाज बेस्ड ऑन हियर से श्रुति ट्रेडिशन. तो सब कुछ खत्म हो जाएगा आप थोड़े से टाइम के बाद. सो दैट वाज द रीजन. ओके, सो द लॉज वर मेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्णा डिफरेंशिएशन, यानी ब्राह्मण्स के लिए अलग लॉज, शूद्रास के लिए अलग. ये चीज मौर्यास के टाइम पर कुछ और थी, है ना. मौर्यास के टाइम पर एवरीवन वाज इक्वल बिफोर द लॉ, है ना. लेकिन गुप्तास के टाइम पर देयर वाज वर्णा डिफरेंशिएशन, डिफरेंट वर्णा, डिफरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट्स. इट वाज द ड्यूटी ऑफ किंग, इट वाज द ड्यूटी ऑफ द किंग टू अपहोल्ड द लॉ. लॉ को अपहोल्ड कौन करेगा? किंग करेगा. किंग विल बी अपहोल्डिंग द लॉ. So basically this was about the judicial system. अब देखते हैं थोड़ा सा लिटरेचर के बारे में, है ना. लिटरेचर के बारे में देखते हैं. So when we say literature, so this period, Gupta period में golden period जब बोलते हैं, it is said like golden period because of its art and literature. Which language became most prominent? Language कौन सी prominent थी? Which language was prominent now? Sanskrit. So Sanskrit was the most prominent language, and also it was the court language. ठीक है. अभी स्क्रिप्ट भी दूसरी आ गई. Earlier आपको याद है, it was Brahmi script. आपको याद होगा Brahmi script. From Brahmi script evolved another script. It was called as Nagari script. Nagari, Nagar, Nagari script. जानी क्या बोल रहे हो? Core language you said. Court language. I said court language. T also. Okay. So now during this period there were so many works that were written in Sanskrit. They were epics. There were poems, there were lyrics, there was plays, drama, there was prose, different type of literature. Okay, so what is an epic? Epic क्या होता है? What is an epic? So Mahabharata and Ramayana are epics, but what are epics? Epics are the long narrative poems. इन्हीं को एपिक्स बोलते हैं. आपने संगम में भी देखा था ना, सिलप्पदिकरम एंड मणिमेगलाई वर एपिक्स, है ना. याद होगा आपको. सिलप्पदिकरम रिटन बाय yes, Elanjo Edigal, and he was younger brother of remember, Cheran Senguttuvan. बहुत बढ़िया, very good. So epics इतनी सारी टाइप की चीजें लिखी गई. In fact, Samudragupta, like who was a poet himself, he patronized many scholars. और चंद्रगुप्त II की कोर्ट में तो there were नवरत्न. अब कौन नवरत्न थे? नवरत्न number 1 was Kalidas, the most important Navratna. Why he was the most important Navratna, and what was the time period of Kalidasa? We don't know what was the exact time period, because he was patronized by Chandragupta II. Kalidasa, he wrote many things. ये याद रखना बड़ा जरूरी है, कालिदासा ने क्या-क्या लिखा. So I'll tell you some of the things written by Kalidasa. Number 1. First is
Abhigyan Shakuntalam. Abhigyan Shakuntalam. Number 2, Malvikagni Mitra. Malvikagni Mitra. Number 3, Vikram Urvasiya. Vikram Urvasiya. Now, we'll give us hot. All these 3 books were written by Kalidasa, and all these 3 are plays. All these 3 are plays. Exam में लिखा आ सकता है. Vikram or Abhigyan Shakuntalam was a drama, or was a play written by Kalidasa, while Vikram Urvasiya was a lyric or a poem. ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए. All these 3 were plays. What is the story of Abhigyan Shakuntalam? Anyone? किसी को पता है अभिज्ञान शकुंतलम की स्टोरी? जानवी को पता है. शकुंतला एंड दुष्यंत. जानवी, you remember the story of Abhigyan Shakuntalam? No, sir. I just played the role of Shakuntala once, so I remember the story. It was Oh a my love God. story. I remember there was a sad phase of Shakuntala, and then there was a happy phase also. So some love story only. I know that. It was way long in school. Okay, but you don't remember the story. Okay, so Shakuntala, she was like a daughter. She was a daughter of Vishwamitra and Menaka. She was a daughter of Rishi Vishwamitra and Menaka, and Shakuntala was abandoned by her parents. She was abandoned by her parents, and like she was living in a in forest, hermit. Okay, रहती थी. Once upon a time, there was a king Dushyant. He was king of Hastinapur. She was king of Hastinapur. So he comes, and जैसे ही वो देखता है शकुंतला को, so because it's a love story, जैसे जानवी ने बोला, so वो देख के, oh my God, she's so beautiful, something like that, and like he marries her, and he gave a ring, to शकुंतला, और बोलता है कि अभी तो मैं वापस जा रहा हूँ. When you come to my place, तो please show me this ring. ये ring मुझे दिखा देना. तो शकुंतला ने बोला ठीक है, okay. But what happens? Someone gave a curse to Shakuntala. कि King Dushyant will forget you. King Dushyant को आप याद नहीं रहोगे. So when Shakuntala goes to meet King Dushyant, so she need to cross a river. और जब river cross करती है तो the ring from that finger, जो ये finger में ring पहनी होती है ना, finger ring, that slips out. वो ring निकल जाती है finger में से. And when she reaches in front of the king, like king बोलता है, I don't know, who are you? किससे मिलना है? Something like that. So that's the story. बाद में king को पता चलता है कि अरे इसका तो बेटा भी है, and the beta was actually, the son was actually of King Dushyant, and his name was भारत. और ये वही भारत है जिसके नाम के ऊपर हमारा भारत को भारत कहा जाता है ना. India is also called as Bharat after this name, and यही भारत from इसी lineage से कौरवास and पांडवास भी आए. कौरव्स एंड पांडवास है ना, वो भी lineage यही भारत से है. ओके, सो ये स्टोरी महाभारत के स्टार्टिंग फेज की भी मेंशन है. ओके, सो कुछ अलग अलग बातें हैं. कहीं पे लिखा हुआ है कि शकुंतला को दुष्यंत को शकुंतला मिल जाती है, एंड कहीं पे नहीं मिलती है ना. डिफरेंट वर्जन्स, डिफरेंट स्टोरीज, बट दैट इज द स्टोरी ऑफ अभिज्ञान शकुंतला. देयर इज अ स्टोरी ऑफ मालविका अग्निमित्रा. So this Agnimitra, who is this? Agnimitra. This is Agnimitra, and this is Malvika. This is not Malaika. This is Malvika. Okay, Abhinay, please don't take her as Malaika. I know आपको Malaika बहुत पसंद होगी, Abhinay, but this is Malvika. ठीक है, difference, थोड़ा सा difference, Abhinay. So Malvika Agnimitra, again it is a love story of Malvika plus Agnimitra. Who was Agnimitra? Agnimitra was grandson of Agnimitra, was successor of Shungas. Pushyamitra Shunga का है ना. तो this man Agnimitra, he loved a lady Malvika. Malvika was a what is the word, handmaiden of his queen actually.
जब इसकी क्वीन को पता चलता है, अग्निमित्र की क्वीन को पता चलता है कि ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा है, मेरी नाक तले ऐसा सीन चल रहा है, सो शी ऑर्डर्स to imprison this lady Malvika, but later like she was released and the wife of Agnimitra जिसने imprison कराया था उसको लगता है कि नहीं नहीं we cannot, हम दोनों को अलग अलग नहीं रख सकते हैं, and later she come to know that actually इसकी lineage एक royal family से, she was actually from royal family, so वो इन दोनों की शादी करवा देती है, मालविका प्लस अग्निमित्र. That's the story of मालविका अग्निमित्र. विक्रम और वसिया, विक्रम और वसिया. तो विक्रम और वसिया अगेन इट इज अ लव स्टोरी. इसमें एक अप्सरा की बात है. द नेम ऑफ दैट अप्सरा वाज, अप्सरा का नाम था अरे वो इतना अच्छा गाना प्रभुदेवा का डांसिंग, उर्वशी. उर्वशी. The name of Apsara is Urvashi and the name of the hero king is Pururavas. Pururavas. तो उर्वशी is an अप्सरा. तो जब ये वापस अपने लाइक हेवन जा रही है तो उसकी नजर पड़ती है पुरुरवास के ऊपर और वहीं पे दोनों को लाइक लव हो जाता है. सो ऐसे कुछ बैकग्राउंड की बैकड्रॉप में स्टोरी है विक्रम और वसिया. सो दीज आर द थ्री प्लेज व्हिच वर रिटन, व्हिच वर लाइक रिटन बाय कालिदास. ये तो थे प्लेस, दीज वर द प्लेस. नाउ एपिक्स, कुछ एपिक्स भी थे. एपिक्स, टू एपिक्स, रघुवंशा and number 2 Kumar Sambhava. Raghuvamsa and Kumar Sambhava, they were the epics. ये epics थे. Raghuvamsa, it is like about the kings of Raghu dynasty, about the kings of Raghu dynasty. रघु के वंश, रघुकुल राम. सुना होगा ना आपने रघुकुल राम, आई गेस आपने कई बार सुना होगा ना ये वर्ड रघुकुल राम. सो राम वाज फ्रॉम रघुकुल. सो इट इज द स्टोरी, इट इज अबाउट द किंग, अबाउट द किंग्स ऑफ रघु डायनेस्टी. रघु डायनेस्टी के लाइक किंग्स के बारे में है ये. एंड कुमार संभवा लाइक इट इज रिगार्डिंग द बर्थ ऑफ कुमार. हु इज दिस कुमार? कुमार इज एक्चुअली कार्तिकेय. ये पता है कौन था कार्तिकेय? सन ऑफ शिवा एंड पार्वती. कार्तिकेय वाज सन ऑफ शिवा एंड पार्वती. So this is regarding the birth of कार्तिकेय, कुमार संभवा. ठीक है, ये दो थे एपिक्स. एपिक्स के बाद टू लिरिक्स थे. नंबर 1 ऋतु संहार एंड मेघदूत. ऋतु संहार like it, many people consider this as the earliest work of कालिदासा. ठीक है, ये किसके बारे में है? दिस इज ऋतु संहार. व्हाट इज ऋतु? ऋतु क्या होता है हिंदी में? द वर्ड ऋतु मीन्स सीजन. ऋतु मीन्स सीजन. संहार मीन्स गार्लैंड. It is something like this. One season, then next, and then next. It is like about the change of the seasons. And Meghaduta, my favorite. मेघदूत की स्टोरी बता दो थोड़ी सी. It is about a yaksha. एक यक्षा है. You remember ना यक्षा, यक्षनी, the protector of the wealth of कुबेर, बताया था मैंने आपको शायद, है ना. तो दिस स्टोरी ऑफ यक्षा. तो यक्षा का रूलर एक साल के लिए बोलता है यक्षा यू नीड टू गो टू पाकिस्तान, है ना. फॉर एग्जांपल यक्षा को बोलता है यक्षा यू नीड टू गो टू पाकिस्तान. आपको एक साल तक पाकिस्तान में रहना, वहीं से काम करना है. ठीक है, यू आर नॉट अलाउड टू डू हियर. आपको एक वर्ल्ड ट्रिप पे जाना है, वर्ल्ड ट्रिप. तो यक्षा मना कैसे करे? यक्षा ने बोला ओके सर, नो प्रॉब्लम्स. यक्षा रीचेस टू दैट प्लेस, है ना. वो पहुंच जाता है, यक्षा पहुंच जाता है, अफ्रीका पहुंच जाता है यक्षा. अब अफ्रीका जब यक्षा पहुंच जाता है, यक्षा इज डूइंग हिज वर्क, व्हाटएवर ही इज अलॉटेड, जो भी काम दिया यक्षा काम कर रहा है. नाउ व्हेनेवर यक्षा इज फ्री,
यक्षा को याद आ रही है उसकी वाइफ, यक्षा को उसकी वाइफ याद आ रही है. Okay, and it's actually like something which happens to all of us. And it's very like but natural thing. ये बहुत एकदम प्रैक्टिकल लगता है मुझे ये वाला, जो ये तभी मेरी फेवरेट है मेघदूत. सो यक्षा, अब यक्षा क्या करे, यक्षा को यक्षा की वाइफ की याद आ रही है. like he remembers the wife. Now yaksha wants to tell his wife two things. पहला how much I love my wife, and number two, I'm missing you. I'm really missing you. But how to tell the wife? मैं तो इतना दूर, मैं अफ्रीका में बैठा हूँ, वाइफ वहां पर है, मैं अफ्रीका में बैठा हूँ. यक्षा क्या करता है, यक्षा जब बैठा हुआ है तो ऊपर आसमान में there is a cloud. तो यक्षा asks this cloud to take the message of love, to the wife, to take the message of love to his wife. Okay, so बड़ा ही बेहतरीन सा एक प्लॉट है, वेरी नाइस प्लॉट. तो कितना बढ़िया लाइंस लिखी हुई होंगी, कभी आपको टाइम मिले यू कैन रीड. ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. So these were the books about Kalidasa. Now, what to remember? You need not only to remember the name of the books, but also whether the books are plays, epics or lyrics. ये भी याद रखना है. कौन-कौन से plays हैं, कौन-कौन से epics हैं और कौन-कौन से lyrics हैं. What is the reason I am telling you some stories also? थोड़ा backdrop क्यों बता रहा हूँ? You know what is the reason? I am telling you some backdrop? Yes, tell me what is the reason I am telling you the backdrop. याद रहे. Okay, आपको याद रहेगा ऐसे. मुझे ऐसे ही याद रहा था. ठीक है, जैसा मुझे याद रहा था वही मैं आपके लिए अप्लाई करता हूँ. तो इसीलिए थोड़ा सा याद रखने के लिए प्लीज जॉट डाउन, जो छोटा सा मैंने बैकड्रॉप बताया साइड में लिख लेना. It will help you. Yes, Sabna, you can retain all these things. Otherwise, after some time, it will become impossible to remember कि Raghuvamsa was an epic or a play or lyrics and written by Vishakhadat or Kalidasa. ठीक है, तो ये तो था about Kalidasa. Now Vishakhadat. तो Vishakhadat का तो already हमें पता ही है. Two stories about Vishakhadat we have already seen. One was Mudra Rakshasam and another was Devi Chandraguptam. Both are dramas and दोनों की स्टोरी आपको पता है. Yes or no? अभिनय, सिंधुजा, दामिनी, जानवी, कांची, मृगांक, सबना, शुभ्रा, दोनों की स्टोरी पता है. मुद्रा राक्षसम as well as देवी चंद्रगुप्तम. Okay. Next person is शूद्रक ने इसी टाइम पर ड्यूरिंग टाइम ऑफ गुप्तास एक बुक लिखी. द नेम ऑफ द बुक वाज मृच्छकटिका. ये नाम सुना है कभी किसी ने? They were plays, right? Vishaka, that's both of the pieces. They were plays. Yes, ये plays और ड्रामा एक ही बात है. ओके जानवी. सो शूद्रक ने एक बुक लिखी मृच्छकटिका. इट वाज अबाउट, इसमें हीरो कौन है? इसमें एक हीरो है, एक वेरी नोबल ब्राह्मण. ब्राह्मण्स को तो वैसे भी बुक्स में हमेशा नोबल ब्राह्मण ही दिखाते हैं, है ना? Okay, so like he was a very noble Brahmin, and his name was Charudatta. And he loves a courtesan. एक courtesan को प्यार करता था. अभी आप देख रहे हो why in our Bollywood सारी की सारी मूवीज है ना, अभी थोड़ा सा मूवीज को छोड़ दो, अब आपको पता चल रहा होगा why all movies of Bollywood are based on this thing, only love and love, है ना, because हमारा ट्रेडिशन यही है ना. So it was like he was a Brahmin, Charudatta, and he loved one courtesan. Her name was Vasanta Sena. और इस बुक में एंट्री होती है विलन की. There is a villain also. उसका नाम है शकारा.
शायद इसी से प्रभावित होकर शाकाल नाम रखा होगा। तो शकारा वाज द विलन। तो शकारा मिलने नहीं देता चारुदत्ता को बसंत सेना से। दैट्स द स्टोरी ऑफ दिस बुक, मृच्छकटिका। एक्चुअली दिस इज नॉट अ ओरिजिनल स्टोरी। मृच्छकटिका का मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होता है लिटिल क्ले कार्ट। This is not the original story. Original story was written by Bhasha. He was a poet in the Gupta period, early Gupta period, and he wrote many plays. Bhasha, ठीक है, इन संस्कृत में भी लिखे और प्राकृत में भी लिखे। एक बुक लिखी दरिद्र चारुदत्ता। He wrote Daridra Charudatta. This book, Daridra Charudatta, it was later refashioned as Mritchikatika. यही बुक बाद में रीफैशन हो, दोबारा से इसको रिक्रिएट करके लाया गया एज मृच्छकटिका। तो दरिद्र चारुदत्ता वाज द बेसिक, लाइक पुराना जो ओरिजिनल वर्क था, दैट वाज दरिद्र चारुदत्ता। तो मुझे ऐसे लग रहा है मैंने बहुत सारी बुक्स बता दी हैं आपको। आई डोंट नो, आई थिंक थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको याद रखना। इज इट सो? मुश्किल होने वाला है कि नहीं? अभिनय, सिंधुजा, दामिनी, जानवी, कांची, मृगांक, सबना एंड शुभ्रा, will it be difficult to retain all the names of the books? Yes, tell me. But these are important. Actually these are important. कांची सिंह मॉडरेट। देखो, इसको आसान करने का एक ही तरीका है, and the way out is please revise today itself, because still there are many books which are remaining, है ना? Still there are many books which are remaining. जितनी आ रही हैं इतनी लगभग हो रही हैं अभी। Okay, and those I'll be telling you tomorrow. वो मैं आपको बता दूंगा कल बता दूंगा मैं आपको। तो फिर क्या होगा, ये वाली आज रिवाइज कर लेना, कल वाली कल रिवाइज कर लेना, आपको याद रहेगी। एंड रिमेंबर, स्टोरी साथ में आपको याद रखना, मृच्छकटिका, चारुदत्ता, वसंत सेना एंड शकारा। ओके, अगर किसी को मुश्किल आए तो मुझे बताना, देखते हैं कुछ कैसे करके बताता हूँ आपको फिर कैसे याद रखना। और व्हाट यू कैन डू इज राइट द नेम्स ऑफ दीज बुक्स। इन बुक्स के नाम एक पेपर के ऊपर लिखो, किसने क्या लिखा है, प्ले है क्या है, एक शीट बनाओ, एंड wherever you are having that table, study table, इसके सामने paste this sheet in front of your like table chair, ठीक है, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो। तो जब भी बैठोगी हल्का सा नजर मार लेना। और I guess by now all must have like pasted a chart paper in front of your table, तो यहीं पे लिख देना, इसी चार्ट पेपर के ऊपर साइड में लिख देना। एक जगह एक कॉर्नर में लिखना कालिदास के प्ले, एक में लिखना एपिक, और एक कॉर्नर में लिखना क्या बोलते हैं लिरिक्स, है ना? अलग अलग कॉर्नर पे लिखना, अलग अलग कॉर्नर्स पे। सो व्हाट विल हैपन इफ सच इज द थिंग कि आप, दिस इज योर चार्ट, दिस इज द चार्ट, इफ दिस इज द चार्ट, इस चार्ट पे यहाँ आपने लिखा हुआ है मालविका अग्निमित्रा एंड यू हैव रिटन प्लेस, है ना? यहाँ लिखा है मालविका अग्निमित्रा, तो यू विल रिमेंबर फॉर श्योर कि यस मालविका अग्निमित्रा वाज रिटन ऑन दैट कॉर्नर, वो वहां पे था प्ले। आई एम डैम श्योर कि मालविका अग्निमित्रा वाज अ प्ले। ओके, ट्राई टू डू दिस। जिसको भी परेशानी आए, ट्राई टू यूज दिस थिंग, अपने सामने चिपका के रख लेना। ओके, सो वील कंप्लीट गुप्तास टुमारो एंड वी विल स्टार्ट हर्षा। कल गुप्तास खत्म करके हर्षा हम शुरू कर देंगे, एंड डे आफ्टर टुमारो we'll end the ancient India. Okay, bye bye, have a great day all of you.